Rudantamuhurnetra Yudham Bhajantam Param Bhajayogena Satankanetam Rudantamuhurnetra Yudham Bhajantam Param Bhajayogena Satankanetam Oho Swasakam Patri Kakakanta Sita Kraivam Damodaram Bhakti Vadam Mohoswasakam Patri Kakakanta Sita Kraivam Damodaram Bhakti Vadam Oho Swasakam Patri Kakakanta Sita Kraivam Damodaram Bhakti Vadam Mohoswasakam Patri Kakakanta Sita Kraivam Damodaram Bhakti Vadam Isi Duksa Leela Ananda Kunde Soghosam Nimmajantam Akyapayantam Iti Duksa Leela Ananda Kunde Soghosam Nimmajantam Akyapayantam Adeya Sita Kesu Bhakti-Siddhatam Prematastam Sattva-Bhakti Bande Adeya Sita Kesu Bhakti-Siddhatam Prematastam Sattva-Bhakti Bande
Hare
कार्तिक मास के कार्तिक मास के और प्रमाण दे वेलकम टू हैदराबाद to Attapur. अरे मुझे पूरा एयरपोर्ट में खींच के इधर ले आया। नहीं Please recharge in time. Battery is low. Please recharge in time. Battery is low. Please recharge in time. రాధాకృష్ణ బాబు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. హే జగన్నాథ్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ డివోటీ. ఈరోజు మనందరి సౌభాగ్యం మనతో పాటు లీలా పురుషోత్తంతో వచ్చారు. టుడే ఇస్ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. We are all getting association with grace Leela Purushotham. So let me introduce Prabhu in few words. Battery is low. Please recharge in time. హిందీలో చెప్పాలా? తెలుగులో చెప్పారు. అందరు మోస్ట్లీ తెలుగులోనే ఉన్నారు. హిందీలో చెప్పు. प्रभु जी अपना पीएचडी आईआईटी दिल्ली से किया था. उस समय एमटेक पीएचडी करते समय प्रभु जी को इस्कॉन से इंट्रोडक्शन हुआ था. मगर उसके पहले बचपन से ही प्रभु जी उड़ीसा से हैं. हरिनाम करना उनका जीवन में भाग था. सो बचपन से कृष्ण का भक्त था. और जब इस्कॉन से मिल गया था कृष्ण स्मरण प्रभु के द्वारा, तब से इतना सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाया. और जब अपना पीएचडी के बाद प्रोफेसर बने थे इस इलाके में, और वो फाइल को पूरा
बांटने लगा। इतना लोग, इतना बच्चों को पढ़ाया था कृष्णा कॉन्शियसनेस का, सो मेनी स्टूडेंट्स बिकेम डिवोटीज। और उसमें माता जी का भाई भी एक है, माधव गोपीनाथ प्रभु है, इधर बड़े बड़े प्रीचर्स बने, सो मेनी स्टूडेंट्स बिकेम बिग प्रीचर्स with Prabhuji's association. After some time, he was doing service in Bhakti Vedanta Institute (BI), and then he took a professorship in IIT Kanpur. And there also he was preaching tirelessly, and so many students. At least मेरा जान पहचान में so many students are there who are very fiery preachers, and then. ऐसा करते करते प्रभु जी लिव गीता, लर्न गीता, लिव गीता करके एक ग्रुप स्टार्ट किया। वो ग्रुप ही spread across the world. So many people are connected to that group and becoming devotees. And अभी प्रभु जी IIT मंडी का डायरेक्टर हैं, like very much closely connected with the government of India. Even अभी हम एयरपोर्ट से आते आते भी वैल्यू एजुकेशन के ऊपर so many directors of NITs and big shots were having some meeting, so they asked Prabhuji to speak about value education. So Prabhuji also IIT मंडी में डायरेक्टरशिप लेने के बाद उधर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक कोर्स शुरू किया, एक डिपार्टमेंट खोले और उधर consciousness के ऊपर consciousness studies के ऊपर courses भी start किए। So like that many initiatives he has taken being director. And हो गया, चलो। अब 8 बज गया ना, कितना 8:30 बज गया। ये सब बोलेंगे तो फिर वापस कुछ नहीं है इधर आने का। हाँ, हो गया। thank you very much. Hare Krishna. So let us all welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. थैंक यू राधाकांत प्रभु। क्या कर रहे हो नारायण? इंटर्नशिप अभी कहाँ पढ़ रहे हो? VIT वेल्लोर में पढ़ रहे हो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हिंदी, इंग्लिश? हिंदी तेलुगु देश में हिंदी हैं? और बाकी जो how many of you are तेलुगु? मोस्टली तो सब तेलुगु वाला हिंदी में जानते हो हैं? 2-3 लोगों के अलावा बाकी सब। हाँ, so this is a surprise हैं? हिंदी in तेलुगु राज्य। Okay, thank you। कोई विषय में सुनना चाहते हैं आप लोग? ऐसे कोई विषय है? Srila Prabhupada's contribution to the world. Srila Prabhupada's contribution to the world. Srila Prabhupada's contribution to the world. कल Prabhupada's disappearance day. Whatever we are, it is because of Srila Prabhupada. हम भी जो भी कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की अनन्य अवदान है मनुष्य समाज के लिए, सारे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए। कुछ दिन पहले मैंने भगवद गीता की जो वर्सेस है उसकी एनालिसिस कर रहा था एक संस्कृत एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर पाई करके एक प्रोफेसर हैं आइजर पुणे में। तो हमने उसको एनालाइज कर रहे थे, तब हमें पता चला कि संस्कृत विद्वान होने से आप वर्सेस को समझ नहीं पाओगे। आचार्य की कमेंट्री चाहिए,
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाय महाजनयेन गतसपथ। परम सत्य और उनकी विषय में जो ज्ञान है वो भौतिक काल और भौतिक स्थान की परे है, यानी कि वो अवर्णनीय है। उसको हम भौतिक माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते, ये संभव नहीं। परंतु भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं वो स्थान काल पात्र के अनुसार उसको ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं जो कि एक मिराकल, चमत्कार हो जाता है। तो प्रभुपाद जी वही किए। अपना 10 साल की जो प्रचार इन्होंने किया सारे ब्रह्मांड में, उस समय में इन्होंने इतने सारे किताब छाप के गए हैं, जिसमें 3 प्रधान हैं, भगवद गीता उसकी कमेंट्री, श्रीमद् भागवतम उसकी कमेंट्री, और श्री चैतन्य चरितामृत उसकी कमेंट्री। ये हमें देखे गए। उसके साथ समरी स्टडीज ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, इस तरह की कुछ प्रधान ग्रंथ के ऊपर भी उन्होंने टीका कमेंट्री देकर गए हैं। एक बार एक इंटरव्यूअर प्रभुपाद जी को पूछे, व्हाट इज योर मेडिटेशन? आपका मेडिटेशन क्या है, इसके ऊपर ध्यान देते? तो प्रभुपाद जी उसके उत्तर में दिए थे, बुक राइटिंग, ये जो किताब प्रभुपाद जी लिखे हैं, दैट इज हिज मेडिटेशन। क्योंकि उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उनको ये आज्ञा देकर गए थे कि जब भी तुम्हारे पास पैसा होगा तुम अंग्रेजी भाषा में हमारी वैष्णव फिलॉसफी, वैष्णव दर्शन शास्त्र को छापो, पब्लिश करो, ये आज्ञा देते हैं। और प्रभुपाद जी वही किए, एंड दैट वाज हिज मेडिटेशन। एवरी डे by the time he goes to bed, 10 o'clock, 11 o'clock, but he will get up at 1 o'clock. 1 बजे जागकर शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे तक वो किताब लिखते थे, डिक्टाफोन में रिकॉर्ड करते थे, और बाद में उनकी शिष्य जो है उसको ट्रांसक्राइब करते थे। और उसके साथ साथ रामेश्वर प्रभु करके हैं, उनके एक शिष्य थे। प्रभुपाद जी के समय में सन्यास थे, अभी सन्यास नहीं है। एक बार ध्रुव मंदिर में वो अपना कहानी बता रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य चरितामृत 2 महीना में पब्लिश हुआ। कोई किताब पब्लिश करने के लिए आज के जमाने में, मैंने भी एक लर्न गीता लिव गीता के लिए किताब मैंने लिखा, बहुत दिन लग गया उसको पब्लिश करने। 5 एस्पेक्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट। और ये 9 वॉल्यूम, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। और उस समय तो ये 9 वॉल्यूम नहीं था, उस समय मेरा ख्याल में 28 ऐसे कुछ वॉल्यूम था, छोटे छोटे वॉल्यूम होकर बना था, और उसको 2 महीने में पब्लिश किया।
सो वो कह रहे थे प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक में गए, बात की टाइम है, रामेश्वर को बोले कितनी समय लगेगा। रामेश्वर प्रभु ने बोले कि प्रभुपाद जी कम से कम 1.5 साल लगेगा, 1 साल 1.5 साल ऐसे। फिर प्रभुपाद जी बोले दैट इज नॉनसेंस, यस अनएक्सेप्टेबल। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को बोले कि अगर ये संभव होगा, ये संभव होगा, ये संभव होगा, ये संभव होगा, तो हम इसको 1 साल में पब्लिश करेंगे। फिर प्रभुपाद जी फिर गाड़ दिए, बोले ये भी बहुत, क्योंकि प्रभुपाद जी हैज गिवन एवरी मटेरियल, नाउ इट हैज टू बी प्रिंटेड। प्रिंटेड का अर्थ क्या है, पूरा एडिटिंग होनी है और बंगाली स्क्रिप्ट है उसमें। दूसरा वो है पेंटिंग। हमारी प्रभुपाद जी की किताब में क्या होता है, उसमें लाल की किताब लाल, उसमें आप देखे होंगे ना प्रभुपाद जी की किताब में, तो अगर इसमें चैतन्य चरितामृत है एक वॉल्यूम ले आइए। हाँ हाँ, ये देखिए हर जो वॉल्यूम में ये सब, ये पेंटिंग सब, ये सब बना के रखना पड़ेगा। और सबसे महान मुश्किल है क्योंकि एवरी जो मेन जो इवेंट है उसको सोचकर समझकर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बोले, फिर प्रभुपाद जी बोले कि मुझे 2 महीने में चाहिए। उन्होंने 1.5 साल से 1 साल, मेरे ख्याल में 2 साल से शुरू हुआ होगा, 9 साल 9 महीना। प्रभुपाद बोले नहीं मुझे 2 महीने में चाहिए। तो रामेश्वर प्रभु बोले कि असंभव। Then Prabhupada for the first time that very famous statement he made, impossible is a word in Fool's dictionary. असंभव ये एक वोकाबुलरी होता है जो मूर्ख हैं उनकी डिक्शनरी में होता है ये। तो प्रभुपाद जी बोलकर आगे चले गए और उसके बाद रामेश्वर प्रभु अपना सर को ऐसे ऐसे मसाज करते रहे, सोचते रहे। फिर जब वापस आए प्रभुपाद जी तो रामेश्वर प्रभु बोले ठीक है मैं 2 महीने में आपको करके दूंगा, प्रोवाइडेड यू आर विथ मी फॉर 2 और बहुत सारे कंडीशन दिए। कंडीशन देने के बाद 2 महीने में ये जितने सारे पूरा चैतन्य चरितामृत देख रहे हो ये पब्लिश हो गया। ठीक है, प्रभुपाद जी की बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है मगर the best contribution is his books. अगर आज मैं मेरा कृष्ण भावनामृत को सस्टेन कर पा रहा हूँ because I regularly read Prabhupada books, I meditate on these books, और उस किताब की जो हम पढ़े हैं सीखे हैं उसके अनुसार हम बहुत सारे थ्रेड हमारा निकल रहा है, कैसे हम आगे इसके बारे में सोच कार्य कर सकते। तो आने वाले दिनों में प्रभुपाद जी की जो कंट्रीब्यूशन है सारा विश्व समझेगा क्योंकि सारे विश्व जो है नॉर्मली तमोगुण की प्रभाव में है। तो प्रभुपाद जी जो लेके हमें दिए हैं वो है essence of everything that exists. क्यों सब कुछ है, इतनी वैरायटी क्यों है चारों तरफ?
ये सब की ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द सोर्स? ये सोर्स किस सब्सटेंस में बना हुआ है कि उसकी प्रकाश इतनी वैरायटीज हो जाता है। जैसे आप लोग देखा है 11th चैप्टर भगवद गीता, भगवान कृष्ण अपना क्या दिखा रहे हैं? विश्व रूप दिखा रहे हैं। उसमें क्या दिखा रहे हैं? उस विश्व रूप में भगवान की अनेक वस्त्र, अनेक हाथ, अनेक आंख, भगवान के शरीर में मैंने वो जो विश्व रूप है, ना उसकी आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। 33 करोड़ देव देवी सब उसी में है। ये भी कहा गया है अगर इकट्ठा हजारों सूर्य एक साथ उदय होंगे आकाश में, उनकी तेज जितना होगा उससे कई गुना तेज जो है इस विश्व रूप से। तो यानी कि प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत हमें जिस तरह दिए हैं उसमें सेंटिमेंटलिज्म की कोई जगह नहीं। भारतवर्ष में सभी मंदिर जाते हैं मगर अपना दुख को और दुख को प्रकाश करने के लिए, ये भगवान मैं दुखी हूं, और कुछ जाते हैं अर्थ के लिए जाते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह ही ज्यादातर लोग जाते हैं मंदिर में। मगर प्रभुपाद जी हमें कृष्ण भावनामृत को ऐसे दिए हैं उसमें सेंटिमेंटलिज्म की कोई स्थान नहीं। प्रभुपाद जी एक इंस्टीट्यूट स्थापन किए, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। उसका पहला इंस्ट्रक्शन है एस्टैब्लिश कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए साइंस। आप एस्टैब्लिश करो कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है। ये सेंटिमेंट प्रभुपाद जी साइंटिफिकली बताएं भक्ति योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी कितने सारे किताब लिखे हैं मगर उनकी जो लेक्चर था, जब भी वो बोलते थे, प्रभुपाद जी कभी लंबा कभी बोलते नहीं। उनकी मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स, कोई निकाला जो है 20-25 मिनट्स। और जब भी बोलते थे ज्यादातर उनकी जो चर्चा की विषय वस्तु होता था आत्मा और शरीर के बीच में क्या प्रभेद है। पहले समझो आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसमें अंतर सीखो। और मेजॉरिटी ऑफ द purport of Prabhupada most of the time dwells with this particular concept, spirit और मैटर, इसमें प्रभेद क्या है। जब हम वेदांतों को गहराई में समझने के लिए कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे ये जो आत्मा जो है ये हमारा समझने का विषय वस्तु नहीं है। हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे अंदर जो लिविंग सिम्टम है, हमारे अंदर जो कन्विक्शन है,
ये भी भौतिक है। प्रभुपाद जी बताएं कि मन, बुद्धि, अहंकार ये सब भौतिक शक्तियां हैं। जब मन, बुद्धि, अहंकार भौतिक शक्तियां हो गया तो फिर कहाँ हम उस आत्मा को पकड़ सकते हैं? क्योंकि हमारी, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, लोहा को आग में जब डाल देते हो बहुत समय तक, वो लोहा आग जैसे काम करता है। ऐसे ही अनादिकाल से हम भौतिक प्रकृति में जी रहे हैं, इसीलिए हम हमारा असली प्रकृति को पकड़ नहीं पा रहे। पकड़ना मुश्किल है। लुइसबर्ग यूनिवर्सिटी में एक बार मैं प्रोग्राम करने के लिए गया था। मेरा एक दोस्त था बटू कृष्णा, वो मुझे बुलाया था। तो उस ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट थे, उसमें एक अमेरिकन भी था। ETH ज्यूरिख में पढ़ रहा था। तो हमने शुरू किया आत्मा और पदार्थ में क्या अंतर है, जड़ शक्ति और चेतन शक्ति में अंतर क्या है। सुबह से हमने शुरू किया, ऑलमोस्ट शाम तक उसको समझ में नहीं आया। तो उसके बाद बहुत चर्चा हो रहा था, फिर बोला कि ठीक है, बटू कृष्ण को बोला तुम कीर्तन करो, मैं खाना बनाता हूँ। और मैं खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, सबको दिलाया। तो तब मैं सोच रहा था, एक दिन लग गया। वो अमेरिकन बच्चा पढ़ रहा है, वो ETH ज्यूरिख में, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, यूरोप का तीसरा बेस्ट यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, उसके बाद ETH। उसमें पढ़कर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है आत्मा और चेतन शक्ति, जड़ शक्ति में क्या है। हमने फेल हो। तो उस समय हम प्रभु को प्रार्थना ही किया कि आपने कैसे हजारों को समझा दिया। तो ये अगर हमारे अंदर वो आत्मशक्ति है नहीं, वो प्यूरिटी है नहीं, हम उस विषय वस्तु को दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करा पाएंगे। We cannot make others to understand this very topic. इसके लिए प्यूरिटी चाहिए, ऐसे संभव नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोले, प्यूरिटी इज द फोर्स। हम कुछ भी करते हैं, अगर प्यूरिटी नहीं है तो कोई फायदा होने वाला नहीं। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और क्या रहेगा? फोर्थ क्या है? Preaching is ब्रीचिंग इज द यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यानी कि सब कुछ भगवान की है। प्यूरिटी कैसे आएगा? ना हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं उसको पालन करो। तो प्रभुपाद जी जो दिए हैं, अभी लड़की गीता में शायद 2 महीना पहले कोई एक पूछा कि प्रभुपाद जी इस्कॉन में अभी कौन आचार्य है, ये प्रश्न बोला पूछा। बोला इस्कॉन में एक ही आचार्य है, प्रभुपाद जी। इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, मगर आचार्य एक ही है, वो है श्रील प्रभुपाद। तो प्यूरिटी इज द फोर्स। वो प्यूरिटी कैसे आएगा? ना प्रभुपाद जी जो हमें दिए हैं उनकी किताब को पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते नहीं, किताब वितरण करते हैं मगर पढ़ते नहीं।
वितरण कर लेते हैं, किताब लेके दिन भर घूम घूम कर पढ़ दे देते हैं, मगर पढ़ते हैं। So purity is the force. Books are the basis. प्रभुपाद जी जो ग्रंथ हमें दिए हैं वो बेसिस है, उसके आधार पर ही हम समझ सकते हैं ये सत्य है, ये असत्य है, ये नित्य है, ये अस्थायी है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये समझ सकते। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सब कुछ भगवान का है, स्थान काल पात्र के अनुसार। हाउ कैन यू यूटिलाइज एवरीथिंग इन कृष्ण सर्विस? जब प्रभुपाद जी के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों की प्रभाव बहुत था भारतवर्ष। Entire India was colonized by British. इसलिए आजादी की संग्राम चल रहा। हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोले रियल आजादी जो है वो भगवत प्रेम को प्राप्त है। ये जो पावर एक हाथ से दूसरी हाथ को ट्रांसफर हो जाएगा, उससे आजादी नहीं मिलता है। रियल आजादी तब मिलेगा जब हमें कृष्ण भक्ति मिलेगा। That is the most difficult time to preach. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये जिस समय में प्रचार किए हैं, that is the most difficult time. क्योंकि अभी भारत आजाद होकर 75 ईयर्स हो गए, 1-2 साल तो नहीं है। पता चल गया ये आजादी होकर भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। Rather, we have degraded more. पहले ग्रामीण कल्चर was there, was intact. अब तो पूरा घर घर में मांस, घर घर में दारू, घर घर में राजमहेंद्री, you know राजमहेंद्री? I went to a village near Rajmahindra. हाँ, ये विशाखापट्टनम से दूर की बात है। तो ये राजमहेंद्री आई वेंट, मैं गया था उधर, एक गांव में गया था प्रोग्राम करने के लिए। और उस समय नवरात्र चल रहा था। तो नवरात्र मीन्स यू हैव टू you should not eat meat, है कि नहीं? नवरात्र में सब नवरात्र पालन करते हैं। तो गांव में एक, आंध्र की गांव में एक ये है, ये ट्रेडिशन है, नवरात्र पालन करने का अर्थ है हमें कुछ आमिष चीज नहीं खाना है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई भी नहीं खाना है। और मैं आश्चर्य हो गया, मुझे पता चला कि वो राजमहेंद्री की जो गांव में गया था, उस गांव में आसपास जितने गांव है सब क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्यों? ना क्रिश्चियन बनोगे तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। So you have no problem. You don't have to worry about Navratri. And this is the reason by which people are becoming Christian. तो
हमारा जो स्थिति था 1947 में, that was much brighter and very wonderful. वासु घोष प्रभु मुझे बता रहे थे 15-16 साल में वो आए थे और हैदराबाद में प्रचार कर रहे थे, मैं आंध्रा में। वासु घोष प्रभु was telling me कि जो हाईवेज में सुबह सुबह हजार बुलक का बैलगाड़ी में अनाज एक शहर से दूसरा शहर को जा रहा है। ये सिचुएशन था। अब लोग कह रहे हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन तो था हमारे पास, समझ रहे हैं नहीं? अब ट्रांसपोर्टेशन सब पोल्यूशन कर रहा है। अब ट्रक की बात करो, कुछ भी बात करो, पोल्यूशन कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। एक विचार हो रहा था, मैं भी गया था, तो बोला सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। घोड़े की टांगा तो बहुत बढ़िया था, स्पीड भी था और सब कुछ हो सकता था। Anyway, वो जमाना चला गया। We could not preserve what we had. 75 years में हमने उसको बर्बाद कर दिया। But at least people could recognize that we are not better off. तो अभी प्रचार करना बहुत आसान है। उस समय तो बहुत मुश्किल था। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा था, जातिवाद बहुत ज्यादा था, और ये कहा गया है कि यू शुड नॉट, जो भी सन्यासी हो गया वो चप्पल नहीं पहन सकता है, शू नहीं पहन सकता है, खड़ो सिर्फ खड़ो पहनेगा। समझ में आता ना? खड़ो है, लकड़ी की चप्पल होता है, गाड़ी में बैठ नहीं सकता है, पैदल ही चलेगा। अब देखा ना चैतन्य महाप्रभु, he traveled from east to west, north to south, everything he walked by feet. पहले जमाने में, अभी मैं केदारनाथ गया था, 1 हफ्ता हो गया केदारनाथ को गया है। आदि शंकराचार्य की समाधि उधर है केदारनाथ। पैदल गए केरला से पैदल गए, पूरा हर जगह में बुद्धिज्म को हटाकर पहुंचे कहाँ पे? बद्रीनाथ और केदारनाथ में उनकी महाप्रयाण हुआ, समाधि को प्राप्त किया, सब पैदल। परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णविज्म को प्रचार करने के लिए कोट पहने, शू पहने और अम्बासेडर गाड़ी में बैठकर घूमे प्रचार करने, और सबको गाली दिए, ये सब दुगले हैं, हिपोक्रेट्स हैं। इसकी कारण भी है, और प्रभुपाद जी उसको आगे ले गए। वो तो अम्बासडर में बैठकर प्रचार किया, प्रभुपाद जी हवाई जहाज में बैठकर प्रचार किया। आपको पता होनी चाहिए, प्रभुपाद जी 1965 सितंबर महीना में जाके सितंबर में जाके पहुंचे बोस्टन में, और पहला बार प्रभुपाद जी हवाई जहाज में चढ़े जब वो न्यूयॉर्क से गए सैन फ्रांसिस्को। वो पहला बार, क्योंकि इधर से जब अमेरिका गए तो स्टीमर में गए जलदूत हैं, परंतु प्रभुपाद जी सारे विश्व को घूम लिए किसमें? सो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मगर इसको हमें इमिटेट नहीं करना है। प्रभुपाद जी कर लिए इसलिए हम कर लेंगे।
ऐसा नहीं होनी चाहिए। बट आई एम जस्ट गिविंग यू यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी preaching is essence. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, a dead fellow cannot preach. One who is dead, he cannot preach. Preaching वो कर सकता है जो आत्मा में जाग के है। If somebody is consciously situated in soul, Atman, he or she can preach. तो ये सिद्धांत था। इतना बड़ा टॉपिक के बारे में पूछा, कैसे उत्तर देंगे? प्रभुपाद जी के बारे में कितने भी हम there are so many anecdotes, so many things। हमारा हरिशौरी प्रभु अपना डायरी लिखे हैं प्रभुपाद जी के बारे में। हरिशौरी डायरी। श्रुतकीर्ति प्रभु उनका एक पर्सनल सर्वेंट है। उन्होंने एक वेबसाइट बना दिए हैं जिसमें उनकी जो प्रभुपाद जी के साथ इंटरेक्शन है उसको लिखे रखे हैं। प्रभुपाद जी की पहला प्रिय शिष्य जो थे ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने स्वामी जी करके एक किताब लिखे हैं, बायोग्राफी प्रभुपाद जी, अपना रिलेशनशिप प्रभुपाद जी। श्याम सुंदर अधिकारी 3 गृहस्थ को प्रभुपाद जी भेजे थे लंदन। जानकी, मुकुंदा, गुरु एंड यमुना एंड श्याम सुंदर एंड मालती, ये 3 कपल थे। वो तो श्याम सुंदर आके लंदन में इन लोगों की मित्रता हुआ, श्याम सुंदर प्रभु की मित्रता हुआ जॉर्ज हैरिसन के बाद साथ। उसके बाद वो एल्बम बना और कैसे वो हिट हो गया। तो ये सब बड़े स्टोरी है। श्याम सुंदर अधिकारी, he has written book shooting the rhinos, Chasing the chasing the rhinos, chasing the rhinos, 2-3 volumes. Miracle in Second Avenue, this is written by Mukunda Prabhu, Mukunda Goswami, Mukunda Goswami Maharaj। तो ऐसे बहुत सारे, और ओरिजिनली सत्स्वरूप दास गोस्वामी compiled Prabhupada Leela by the order of the GBC। ऐसे बहुत ग्रंथ आ चुका है प्रभुपाद जी के बारे में जानने को, और मेरा ख्याल में आपको पढ़ना चाहिए। मुझे तो बहुत सबसे जितने सारे हैं सबसे ज्यादा पसंद है मिरेकल इन सेकंड एवेन्यू। सभी, बिकॉज अब देखो वो स्वामी जी जो किताब है उसमें ब्रह्मानंद प्रभु वो लिख रहे हैं। पहले स्वामी जी थे, पहले लिख रहे हैं। उस समय प्रभुपाद जी उनको अलग कर दिए, कुछ गड़बड़ हुआ उनको अलग कर दिया और उनको बोले तुम सन्यासी। सन्यासी क्या है अमेरिकन को पता नहीं, इसको क्या पता है? बस बताया गया कि सन्यासी में कहीं नहीं रह सकता है, ऑलवेज ऑन मूव। And he accepted Prabhupada's order, followed his order. He didn't know what to do. कहाँ रहना है, क्योंकि मंदिर के प्रेसिडेंट थे ब्रुकलिन, क्या है मैनहट्टन में, इतना बड़ा टेंपल था, सभी उनको पूजा कर रहे थे। बीबीटी जो शुरुआत हुआ वो ही वाज द लीडर। अब उनको बोले भाई जाओ, 2-3 साल के बाद बस सन्यास। तो इससे बहुत सारे सीख मिलता है। You learn many things from this. Recently, Chandramouli Maharaj was there in Bhaktivedanta Gurukul, Vrindavan में। तो चर्चा हो रहा था प्रभुपाद जी के बारे में।
There are many devotees from whom you can hear about Prabhupada. Giriraj Maharaj, उनका story है. And the famous story is how Juhu temple was acquired from Mr. N, Mr. Nair. That itself is a great history. तो इस तरह की बहुत सारे शिक्षा मिलता है. गिरिराज महाराज की एक स्टोरी है, वो मोहम्मदलाल को कैसे भक्त बनाए. तो मोहम्मदलाल को प्रभुपाद जी की किताब दिखाने के लिए गए थे गिरिराज. बैठे हैं और मोहम्मदलाल जी जो मोहम्मदलाल जो राधा महाराज की शिष्य हैं, उनके पापा अभी रणछोड़ महाराज की आश्रम चित्रकूट है, वहीं पर रहकर भजन कर रहे थे. पता नहीं और उनकी अभी जो मोहम्मदलाल है उनका पापा, तो उनके पास गए थे किताब लेकर प्रभुपाद जी की. और सुबह से बैठे, बिजनेसमैन उनको पूरा बिजी रहता है. उस समय में पता उनको समझ आया कि कोई साधु बैठा है, उनको खराब लगा. तो वो बाहर आए, बोले आपको कितना चाहिए, मैं चेक ली. तो गिरिराज महाराज बोले हमें आपकी चेक में कोई दिलचस्पी नहीं. I want to show you these books are a great gift to humanity and it will help you also. That is when this Mahaprabhu was completely changed. क्योंकि नॉर्मली हमारे जितने सारे साधु होते हैं, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, पास क्यों जाते हैं, भिक्षा प्राप्त करने. तो इस तरह बहुत सारे स्टोरी है. कमाल कृष्ण गोस्वामी गए बाली जानते हो, बाली इंडोनेशिया में बाली है. तो उधर एक प्रोग्राम हो रहा था. तो उस प्रोग्राम में बहुत बड़ा अल्टर है, उसमें बहुत सारे डीटी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, असंख्य. तो बाली वाले जो है हिंदू हैं, उनको तो समझ में नहीं आता है भगवान क्या होता है क्या नहीं. और कमाल कृष्ण गोस्वामी जब देखे ये पूरा, तो उन्होंने ब्रह्म संहिता को बेसिस बनाकर ये बताया कैसे कृष्ण इज द एब्सोल्यूट, कृष्ण इज परम सत्य, कृष्ण भगवान जो है परम सत्य है, उसको बताया. दैट बिकेम ए फेमस लेक्चर. भगवान और डेमिगॉड, what is the difference between God and demigod? So there, all the verses he literally referred like Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana, Satyareka. Then next verse is Hira, Metharthi, Vikar, Vishesi, Yoga. The first one is about Buddha, second one is about Lord Shiva. Then Yatpada Pallava, so that is about Lord Ganesh. Then Yachakuresa Savita Sakalagraha, Surya. So that's how he presented how everybody is serving Lord Krishna. अब देखो ये जो घटना घटी है, हार्डली कमाल कृष्ण महाराज जो है स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट की जो आंदोलन में ज्वाइन करने के बाद स्कूल छोड़ दिया हैं. 10-15 साल
जाकर ऐसे बोल सकते हैं? जैसे कि बॉन्ड परमांश है, ये सब अचिंत्य है। Prabhupada is that touchstone by whose association many Paramahamsas appear in the earthly time. With that I will end. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much. कोई प्रश्न है? Hare Krishna, please accept my blessings. So you mentioned purity, how to get purity, and then you mentioned reading Prabhupada books. So can you please elaborate more? नहीं, ये नहीं कि पहले पीरियड होगा उसके बाद प्रॉपर, नहीं, सब इकट्ठा है. There is not mutually exclusive at one level then next level. Simultaneous. Without reading proper book, how will you attain the purity? These are all principles. It is not that one leads to another. No. Okay. So these are all four principles. Preaching करने से purity आता है. अब जाके बाहर प्रचार करोगे तो purity आएगी. ठीक है. एक शब्द कृष्ण के बारे में बोलोगे, 20 शत्रु पैदा हो गए. You follow this? The moment you speak about Krishna, you will see 20 enemies. समझ रहे हैं? So this will happen. Like somewhere I spoke meat eating, I didn't speak against meat eating. I spoke in favor of vegetarian climate control. It became a huge story everywhere. Everybody is after. Somebody is targeting. Because when you tell the truth, those who are demoniac mentality, they get disturbed. अगर purity नहीं है, you cannot face them. You cannot face them. Right? So, by preaching, by using everything in Krishna's service, by reading books, you become pure. और कोई प्रश्न? I have one more. Son of Bharata by Narendra Modi is publishing this what Prabhupada life story is recommending. Actually, there is a short film Prabhu. Actually, Narendra Modi ji is the what is that? voiceover. Son of Bharat. Son of Bharat. On YouTube. क्या क्या है? There's one short film Prabhupada Modi has spoken something. voiceover. Good. I'm just trying to understand. Modi ji is definitely, in my understanding, very pious person, and he has inclination towards Vedic culture also. But his motivation in encouraging and whatever he is doing, like, is he wanted people to become Krishna. I mean, he wanted, really he has appreciation of Prabhupada and encouraging people to take up Krishna consciousness. That's what finally is doing. Whether he has an interest in reaching Krishna consciousness or not, that is not important. What is important is that he has praised ISKCON, he has praised the Prabhupada, he has praised his teaching. That is important. Okay? So, he is a leader. His field of activity is politics. Right? So, we should not go deep into. The fact is that he is able to appreciate ISKCON philosophy. That itself is a great thing.
Just come to many times our Delhi temple. Why others are silent? Like you said, when you talk about the Krishna consciousness or any other vegetarian community, there are so many areas. Is it we have to speak truth or we have to diplomatic or we have to manage the things there? At your level. Suppose I will become Prime Minister, and if I don't do anything about stopping the cruelty to animals, it's bad. Man, it's bad. Okay? So, according to one's status, one should speak. Truth must be spoken. Truth cannot be hidden. When the platform is available, we must speak. Just by initially when we come to Krishna consciousness, it's my small realization. We are very enthusiastic, it's very mesmerizing, and we are full josh. But slowly, as year passes and passes, it really becomes very struggling. I mean, to maintain our mind, the senses, occupational duties. So it becomes very monotonous. Means we, even though we are trying to do our basic sadhana and everything, but we lose that taste. So we sometimes we don't know where is the mistake. Basic things are instructions are always there, but sometimes you Understood your question. See, when you came to Krishna consciousness, it acts as a new form of sense gratification. So it's enjoyable. Okay? It's a sanctified form of sense gratification. Obviously, if you stay at that level, it will be monotonous. One has to spiritually grow. Like when you were a small kid, your food was different. When you're a young fellow, your food is different. When you are like me, an old fellow, if you say that I will eat like a small kid, it will not work. Right? Similarly, you must continuously progress in your spiritual consciousness. So what we are doing is the monotonousness or enthusiasm, lack of enthusiasm, is because of our lack of progress in spiritual consciousness. Right? That there are two sukha. We are reading third canto, where Vidura is asking question to Uddhava. Vidura already knows in Pravasa that Krishna has already left for his abode. But still he is asking. When he met Uddhava in the bank of Yamuna, he is asking, how are Krishna and Balaram? How are Vasudeva, Ugrasena? So that time, in one particular case, about Satyaki, he said, Satyaki or Uddhava? No, Satyaki. Satyaki, he said, Adhokhyaja Sukha. You know Brahma Sukha? Who attained Brahma Sukha? Yogis. In the Himalayas. They separate themselves from everything by insulating from all material activities. They transcend and they recognize the spiritual reality. So that
that reality gives them a sense of happiness. But in that reality, there is no activity. Adhokya Sukha means, we are reading now Damodara Ashtakam. Imagine the happiness that Yashoda has just by taking care of Krishna. From early morning, when Krishna wakes up, she breastfeeds her, and breastfeeds Krishna, and then bathes him, puts Sringara to him, and sends him to play with other cowherd friends. But more important, Krishna is such a Sararati, is such a naughty boy. He can do anything. Very expressive. He's God. Mother Yashoda is churning the butter, but he goes breaks it without caring. The mother is actually making this makhan, and from the makhan, that makhan will feed Krishna. He doesn't care, he breaks it. And mother will tolerate everything. Every day, Mother Yashoda would hear thousands of complaints from her friends. Krishna came today, made my child cry. Somebody will come and complain. Krishna, I was about to milk, but he came and made the calf free. Calf went and drank all the milk. It goes on. All kind of complaint. Mother Yashoda will hear everything. Suppose, in my case, when I hear once one of my colleagues said, "Your two daughters, they are terror in the road." So I smiled at him. I said, but when I came home, I saw my two daughters. I was very angry. But in case of Krishna, thousands of people will come with so many complaints. Mother Yashoda will give them patient hearing. And after that, she will look at Krishna and then will have a beautiful smile. And she will forget all the complaints these people have had. This is called Adhokya Sukha, like Satyaki. He is residing in Dwaraka. He is talking to Krishna. He is dining with Krishna. Right? So this Sukha is of another level. Okay? So one has to, the Sukha that Arjuna has in friendship is obviously higher than what Hanumanji has for Lord Rama. Same Ditya Sukha. So unless we have progressively higher spiritual realization, unless we are internally experiencing spiritual happiness, things will become monotonous. For sure. Okay? So that is why we have to always on our toes. Right? I think it is already late, right? So I have a question, Prabhu, related to the soul, how it travels to different body, and at the same time, we in the ritual world we perform pujas for Pitru Yajna, and we call it as that is also traveling, and it goes to Pitruloka and something like that. So how to understand this transformation of the soul to a different body? Before you try to understand what you understand about
yourself. You have very little understanding about yourself. This is what I am telling all of you. You are a conscious being, yes? Eh? You agree with that? But I will show you that you are not conscious at all. In preaching, we say this is not conscious, but I am conscious, right? Because I have the ability to feel, will, desire, all those things. But these are all material things. They are not spiritual. It is the consciousness that makes you to be aware of things around you. But in that awareness, you have no consciousness. This is our acharyas, they have identified this as a problem called duality of experience. My experience is because that these tattvas are intertwined with conscious energy. But yet, in my experience, I have no experience of the heart. This is the most fundamental question. Again, this duality of experience is very difficult. Even the most elevated soul. Right? But before we solve this problem, we are saying that you should be neutral to sukha, dukkha, success, failure, mana, apamana. What is that verse? Jitatmanaha prasantasya paramatma samahita shitosna sukha dukkhaya yatha mana apamanayaha. So before you can understand this, our acharyas are saying that we should not seek for happiness, material happiness. Why? The moment you seek for material happiness, material miseries will follow. The moment you seek samman, that is respect, disrespect will follow. The moment you seek success, failure will follow. This is true. We are not even free from this. Knowing also, we are every day we go and pray to Krishna. Krishna, I need success. I need respect. I need respect. There are many people, they come to me. प्रभु जी क्या हो रहा है? मुझे कोई respect देता नहीं. मैं इतने सेवा करता हूँ. This is a common complaint I have. कभी कभी डिवोटीज देखा सर, प्रभु जी मुझे तो लगता है मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए. But these are things. So we have to dwell in these things. We have to transcend these things. Then one day you will recognize. Right? So, as far as transmigration of the soul from one body to another, you don't have to go beyond death. You have already transmigrated. You see, when you are a small kid, your number of nervous cells were maximum. When you come out from the mother's womb, that is why a kid can learn many languages in the beginning. But since then, your nervous cells are dying. I am in a state where I have minimum almost. That is why when बुढ़ापा आता है, स्मरण शक्ति चली जाता है. Also,
They're dying. So, no cell that you are born with are with you now. It's gone. Eh? So why we are worried about to know Hari Bhagavan? I myself have transmigrated. I am continuously transmigrating in this very body. I was hearing yesterday one story. Hanuman Prasad Poddar. Have you heard about Hanuman Prasad Poddar? Gita. He gave Prabhupada donation to publish his first volume of Srimad Bhagavatam. The Gita Press. In 2002, when I visited Gorakhpur, I went to his house. He's no more, but 24-hour Hare Krishna Kirtan is there. Right? So he was once sitting in the sea beach and chanting Hare Krishna. And when he opened his eyes, he saw one whitely dressed person, tall person, looks like a Parsi. Standing there, he could not figure out why he's there. Then he started asking him, Baba, kahan se aaye ho? Kya kar rahe ho? He said, I am a preta. मैं प्रेत हूँ. I've done Vaishnava aparadh and suffering in this body. I seek your shelter to get liberated. Right? So, conscious energy is indestructible. Fools, they get worried that I will die. Nobody dies. As per the laws of material nature, everybody is being given a dress according to the state of consciousness. That's it. Our job is to have 100% faith. And child, like that, you have a verse, go and chant Hare Krishna in your home. You don't need messages. Go back. He goes back, but he has no interest in worldly life. And after some time, some years, he chants more, he chants more, he chants more. Literally, he chants every day, on a whole day. Again he comes back to Vrindavan. Again he is rejected. Now he goes back to his home. Now he doesn't stay in his house. He stays in a jungle nearby the village. Makes a kutia and chants there. And later, after a long time, he was accepted. He was given initiation. He became very realized so. So chanting holy name would reveal the sukha that I am telling you. Holy name alone would reveal adhokyata sukha. Sukha that Yashoda is experiencing. Sukha, Saptaki, Uddhava, Arjuna, they were experiencing. Same sukha you can enjoy by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And इसके बाद, this is a professor. He is Ravichandra, N. Ravichandra. He sent me. He is the founding director of IIM Indore. And he read my book, this 5 Aspects of Absolute Truth. And
yesterday or today, he sent me. He read the entire book. Yeah. And he has sent summary. He writes here, I just completed your book on 5 aspects of the absolute truth. I find it very structured, easy to follow. It is a great contribution. Please accept my sincere appreciation of this work. My learning is summarized in a slide. Of course, this is the beginning of my contemplation on this great work. A summary लिखा है इसमें. The book is a structured approach to Bhagavad Gita. It establishes that Krishna is the absolute truth. Attaining Krishna consciousness is the ultimate purpose of human life. Among several routes, Bhakti Yoga is the best. Nama recitation is a sure way to realize the absolute truth. The process of obtaining knowledge is from Guru to disciple. 3 modes decide the attitude and action of individual. And 3 modes dictates 4 categories of Varna and Ashram. Anandamaya is the ultimate destination of an individual. Renunciation leads to this. Right? So basically, he's a professor. Why he has to read a book? By me? But he is reading because he wants to learn. Anybody at any stage of life can learn things. And we should continuously learn. There is no stop. Oh, हमने बहुत पढ़ लिया अभी नहीं पढ़ेंगे. बहुत चैंटिंग कर लिया अभी नहीं करेंगे. Right? Okay. Thank you very much. Hare Krishna. सभी भक्त वृंद की जय हो. Sorry, my flight reached late. It was delayed 45 minutes itself in the Chandigarh itself. And when it reached here also, there was Punjab governor was traveling with us. Listen, so Bangaru Dattatreya. So and because you are there again, it took some time. So this letter, even I didn't have time to change my dress. Thank you very much for tolerating me. Hare Krishna. His Grace Leela Purushotham Prabhu ki.